Assalamu alaikum. My name is Aisha Arshad and I am presenting the topic speaking. Now, first of all, before explaining speaking, we must know where does speaking come from. Speaking is basically a language skills. There are actually four types of language skills, or we call them communication skill. Language is basically a medium to say something, to speak, the way through which humans communicate. Now there are four language skills: listening, speaking, reading and writing. Speaking is the second one of them and it is the important one. Now what is speaking? Speaking is an act of making vocal sounds. Simply speaking means to say something. Speaking means to express one's thought and feelings in spoken language. We speak to convey information. It is the second of the four language skills. It is the action of conveying information. It is the delivery of language through mouth. Now going for a perfect definition according to Oxford Dictionary, the action of conveying information or expressing one's feeling in speech. स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना. हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को जब एक लैंग्वेज में इसको डालते हैं, देन दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग. वी आर स्पीकिंग. हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वी आर समटाइम्स वी आर एंटरटेनिंग समवन, और वी आर सेइंग, कोई हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वी आर जस्ट ब्लैदरिंग. Speaking is a skill that gives us the ability to communicate effectively. It allows the speaker to convey his message in a thoughtful and convincing manner. Obviously, speaking आप बोल कर ही अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वन थिंग, बोल तो हर कोई सकता है, एवरीवन कैन स्पीक, बट द मैनर और द वे विच इज़ द बेस्ट वन, वो किसी किसी को आता है, राइट? थॉटफुल एंड कन्विंसिंग मैनर, इट शोज़ दैट आर्ट, हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को लगे कि या इट इज़ वर्थ लिसनिंग. Speaking is a productive skill. Now, what does productive skill means? It means that it makes us to produce something. We are producing something. What are we producing? We are producing words, sentences, clauses, phrases. We all are aware of them, but when we are speaking, we are explaining them. A study points out that many of us spend 70 to 80% of our working hours in communication. Of that time, we spend 30% on speaking. मोस्टली ऑब्वियसली हम हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारी स्किल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लिसनिंग. बिकॉज वी लिसन टू वर्ड्स, वी लिसन टू पीपल, वी लिसन रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, दैट्स ऑल अदर थिंग्स. सो स्पीकिंग पर जितना हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं दैट इज़ 30%. बिकॉज वी स्पीक एंड इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द टाइम जब हम बात करें सो वी आर सेइंग समथिंग गुड. मे बी समटाइम वी आर जस्ट ब्लैदरिंग, और समटाइम वी आर सेइंग समथिंग गुड इनफ टू लिसन टू समवन एल्स. Now there are four types of speaking: extemporaneous, manuscript reading, memorization and impromptu. I'll explain them one by one. First of all, extemporaneous. The speaker communicates on the groundwork of pre-planned outlines or notes. Pre-planned, it means that जिस बारे में स्पीकर बात कर रहा है, लाइक जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उस बारे में पता है. वी हैव प्री प्लान्ड इट. वी नो हाउ टू स्पीक. We know what to speak. Supported with comments, quotations, facts, figures and other relevant data. Like जो बात हम कर रहे हैं, we are 101% sure that we are saying it correctly. हम जो बात कर रहे हैं that is really authentic to listen. हमारे पास proofs हैं, हमारे पास facts हैं, हमारे पास figures हैं जो इस बात को prove करते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं. That is called extemporaneous speaking. Speaker has, it shows, like it means the speaker knows everything about what he or she is saying. We have our percentages, we have shown our researches कि भाई किस बारे में हम बात करें, that why it is correct and why it is worth listening to others. Second comes the manuscript reading. लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट, सिंपली मैन्यूस्क्रिप्ट जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, इट मीन्स दैट हम जो बात कर रहे हैं लाइक हम देख रहे हैं एंड हम बोल रहे हैं. वी आर स्पीकिंग समथिंग बाय, वी आर सिंपली स्पीकिंग बाय रीडिंग अ टेक्स्ट. द स्पीकर रीड आउट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ हिज स्पीच. स्पीच मीन्स द वर्ड्स ही इज अबाउट टू स्पीक. During reading out his speech, speaker often looks at his audience. This basically happens when we are in a speech or in a debate competition, or sometimes जो कि debaters या जो speakers होते हैं, sometimes
they say something while reading a paper. वो जो बात कर रहे हैं, they know what they are saying, but still they have that paper in their hand ताकि वो एक नज़र मार सकें उस पर कि क्या वो सही है, लाइक वो जो बात कर रहे हैं एंड वो जो वहाँ लिखा है क्या वो एकदम सही है. अक्सर जो कि आप अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पे जो कंपेयरर्स होते हैं उनके हाथ में भी पेपर होता है जिसमें उनकी समटाइम्स वर्ड्स और समटाइम्स जस्ट कीज़ या के पैटर्न्स लिखे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने फॉलोइंग आने वाले कमिंग ड्रामा, कमिंग प्ले, कमिंग डांस, कमिंग एक्ट के बारे में बात करनी है. सो मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग इज़ सिंपली दैट कि हम किसी चीज़ को लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं और ड्यूरिंग रीडिंग हम अपनी ऑडियंस को भी देख लेते हैं कि व्हाट वी आर सेइंग, वेदर दे आर लिसनिंग और नॉट, और वेदर दे आर सेइंग करेक्टली और नॉट, और सेइंग द एक्सप्रेशंस ऑफ द रीडर्स और expressions of the audience out there. Third is a memorization. अक्सर याद करते हुए बात करते हैं. The speaker speaks by memory. Speaks by memory like याद करते हुए, it means that what he has or what he or she has memorized, जो उसने याद कर लिया है वो उसके बारे में बोल रहा है. He learns the data to be spoken. Concepts are important in this regard. Means जो बात मैं कर रही हूँ उस बात को मैंने पहले अच्छी तरह याद किया है, उसके बाद मैं वो बात कर रही हूँ. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, उस तरह जिस तरह कंपेयरर्स होते हैं वो बात करते हैं, इसी तरह जो डिबेटर्स होते हैं वो जब कोई डिबेट दे रहे होते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी उस डिबेट को याद कर लिया होता है, उसे लर्न कर लिया होता है, उसके बाद वो उसके बारे में बात करते हैं. Fourth comes the impromptu. It simply means that readers just say whatever comes in his mind. Speaker conveys those ideas which come in his mind haphazardly. Like जो ideas आ रहे हैं उनको as it is explain किए जा रहे हैं. Like जो mind में आता जा रहा है उसको explain किया जा रहा है. उसका proper sequence है, proper order, pattern है, नहीं है, that doesn't matter. It refers to speak without proper preparation. It means कि reader ने, it means कि speaker ने बात करने से पहले कोई proper outlines, proper guidelines नहीं बनाई जिसके according उसने बात करनी है. Then the main thing, what to speak, कि बोलना क्या है. First of all, brainstorming. First of all, बोलने से पहले, like before to speak, the reader must know or must create a proper outlines or in bullets that what he or she has to speak. It is the process of getting your ideas out on a paper. It shows कि आप outlines लिख लेते हैं. After that, you just look at that keyword or that outline and then you are ready to speak. Speaking with the format. With the format means with the sequence, with the proper sequence. Now the proper sequence is IBC, in which I stands for introduction, B for the body and C for conclusion. It means कि जब एक speaker जब किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो वो स्टार्ट से बात कर रहा है. पहले वो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देगा, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएगा. आफ्टर दैट उसके बॉडी पर, उसके सेंट्रल पार्ट पर आएगा एंड देन फोर्थली कंक्लूजन पर आएगा कि उसने उस सबसे क्या कंक्लूड किया. मे बी उसमें कोई रिसर्चेज इंक्लूड हैं, मे बी कोई परसेंटेजेस इंक्लूड हैं तो वो उसमें डाली जाएंगी. Third one, aiming to persuasion. Aiming to persuasion, being confident and passionate is the key for persuasions. Mean आप उस बात पे डटे रहो, आप अपनी बात पे confident हो, and simply confidence तभी आएगा when you are 100% sure कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है. Fourth one is the perfect clarity of thoughts. Obviously जब आपको अपने thoughts clear होंगे then you will be, जो भी आप कहेंगे that would be perfect, that would be in a perfect or in a proper way. सो स्पीकर के अपने माइंड में, स्पीकर के अपने थॉट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन ही हैज़ टू स्पीक समथिंग. जो वो जिस टॉपिक पर वो बात करना चाह रहा है, ही मस्ट नो, ही और शी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ इट और व्हाट डज दैट प्रॉपरली मीन. देन देयर आर 3 E's ऑफ स्पीकिंग. एंटरटेनिंगली. एंटरटेनिंगली मीन्स आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, किसी को आप ह्यूमरस वे में, लाइक आप कोई बात कर रही हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो कि वो बंदा उसे एंटरटेन हो रहा है, वो खुश हो रहा है, उसे वो चीज़ अच्छी लग रही है. और जब हम ऑब्वियसली ड्यूरिंग स्पीकिंग वी आर सेइंग जोक्स और वी आर टेलिंग समवन अ वे और अ स्टोरी दैट इज़ एंटरटेनिंग वन. Second is effectively. Now when we are speaking we must say the thing effectively. Effectively means that it is in the way that the speaker, that the listener gets it worth listening. जब उसको नहीं लगेगा कि that's not effective or that's not good, he won't listen to you what you are saying.
Third one is enthusiastically. You have the confidence, you have the power to say something. अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम डल इमोशन में कहेंगे like trees of speaking this and that, nobody will listen to you because you don't have the power to speak. अगर आपके powers होंगे, आपके facial expressions involved होंगे, then everybody out there we must listen to you. अगर आप अपनी tone change करें, your tone is changing, you're taking it up and down or anything else, then the listener will लाज़मी आपको सुनेगा. Then there are purpose of speaking, like why we are speaking. हम कुछ बोल रहे हैं, if someone is why someone will listen to us. If we aren't saying anything good, why would anyone listen to us? Merely informing. Sometimes we are speaking, so हम किसी को सिर्फ information दे रहे हैं, बस बता रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि अच्छा this and that. Teaching. हम बोलते हैं, we speak to teach something, to explain something about. For example, we attend lectures and seminars. That is a kind of teaching. Want to convince. We are speaking so we can convince somebody to what we are saying. For example, हम कभी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं तो हमारा वो जो एक्सेंट होगा या वो जो टोन होगी, दैट कॉल के हम कन्विंस कर रहे हैं उन्हें अपनी बात के लिए. Simply trying to entertain. We are speaking just to make someone happy, just हम किसी का मूड अच्छा करने के लिए हम बोल रहे हैं. क्लैरिफाइंग का सिचुएशन, किसी सिचुएशन को किसी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि या दैट इज़ लाइक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दैट मतलब जो हुआ वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ. Want to motivate. There are a lot of motivational speakers out there who just speak to motivate us. That is a very good purpose of speaking. Giving guidance. हम किसी चीज़ को किसी बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे रास्ता भी पूछ लेता है, वी आर गाइडिंग हिम to the true place or to the true thing. We are guiding him. A good speech could be. Now what is a good speech? वो बात, good speech is something कि जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, लेकिन अगर वो अच्छा है तो उसमें क्या क्या हो कि वो इतना अच्छा हो कि लोग उसे सुने. इट मस्ट बी क्लियर. उसे क्लियर होना चाहिए. क्लियर कैसे कि उसमें कोई भी बातें ऐसी ना हो जो कि रीडर को या जो लिसनर को कंफ्यूज कर रही हों. जो आपका लिसनर है, जो हमारी बातें सुन रहा है, वो कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में कि हम क्या कह रहे हैं. वेल रीजन्ड. ऑब्वियसली जो बात हम कर रहे हैं उसका हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, एक प्रॉपर वैलिड रीज़न कि जो हम कह रहे हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. अगर मैं ये भी कहना, अगर मैं कोई सिंपल बात भी कहना चाह रही हूँ, अगर मैं कोई सिंपल बात कहती हूँ, अच्छा इसने ऐसे किया, nobody would believe me. क्यों? क्योंकि ना तो मैंने क्लियर बात की है, ना मेरे पास प्रॉपर रीज़न है. हाँ, अगर मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि अच्छा उसने ऐसा इस वजह से किया, वो जो भी रीज़न है आगे कंटिन्यूड, तो एवरीबडी विल डैम लिसन टू मी एंड एज वेल एज वो मेरी बातें और भी करेंगे दैट व्हाट आई एम सेइंग. थॉटफुल इन अ वे कि आप जो आपका लिसनर है वो उस चीज़ पर सोचे, इवन तो आप खुद सोचे. ये नहीं कि मैं एक नॉर्मल से टॉपिक को लेकर उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ. आई एम स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक, नो वन विल लिसन टू मी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पीक ऑन अ टॉपिक अ काउ, obviously it is clear, but what is the reason behind that cow? I am an adult and now I must speak about the topic to which other adults are listening. Thoughtful. वो इतना thoughtful होना चाहिए. Obviously अगर मैं एक adult के सामने, अगर मैं 20-year-old गर्ल या बॉय के सामने काउ का टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, आई थिंक दैट्स लिटरली वेरी ह्यूमरस. वो बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि मैं एक 20 साल के लड़के या लड़की को क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो इट शुड बी थाटफुल कि उस पर जो हमारा लिसनर है वो खुद सोचे दैट व्हाट्स इट. कन्विंसिंग किस तरह से कि हम उसे अपनी बात पे कन्विंस करें. हम कोई किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते, इफ आई एम सेइंग, अगर मैं ये कहती हूँ कि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़, देन माई रीजन शुड बी दिस कि अगर मैं बॉयज़ को ये चीज़ सुना रही हूँ तो मेरे पास ऐसे रीजन्स होने चाहिए जिससे कि बॉयज़ लाजमी कन्विंस हों, ओके गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़, सो माई स्पीच शुड बी कन्विंसिंग. इफ़ इट इज़ इन कन्विंसिंग दैट इट मीन्स कि वो रॉ उसमें कुछ काइंड ऑफ फॉल्ट है जो कि मेरा जो लिसनर है वो कि कन्विंस नहीं हो पा रहा. बिलीवेबल. आई हैव टू से समथिंग विच समवन बिलीव्स. अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैंने उड़ता हुआ पेन देखा, nobody would believe me. Like seriously, they will be like, what is she saying? So my speech should be believable, worth believable कि कोई उस बात को समझे, उस बात को बिलीव करे कि अच्छा ओके आई एम सेइंग गुड, आई एम
saying something which is believable. So a good speech must be clear, well reasoned, thoughtful, convincing and believable. अगर एक speech में अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, if someone is saying something and that doesn't contain these 5 characteristics, then I don't think that anyone will listen to him. Because we need something, because we people, we need something which is well reasoned. अगर if someone is saying something, we are living in this century and here we all want proof. हम सबको प्रूफ चाहिए किसी भी बात के कहने का. If someone is saying something to us, कोई हमें से कोई बात कह लेता है, we won't believe unless we have the proof or we have listened it from a लिविंग पर्सन. हमने किसी ऐसे बंदे से वो बात सुनी हो जिस पे हमारा फुल ऑन ट्रस्ट हो. अगर हमने किसी ट्रस्टेड पर्सन से वो बात नहीं सुनी एंड समवन एल्स, सम एनोनिमस पर्सन कम्स आउट एंड सेज दैट थिंग, we won't believe. So speaking must be a convincing one, a believable one, so that जो आपका listener है वो believe करे इस बात पे कि yeah, we are saying good. And then problems faced during speaking. Obviously there are problem with a lot of things. किसी भी चीज़ में मसले मसाइल निकल आते हैं. So what are that problem? Basically speaking में भी मसले मसाइल होते हैं. There are problems. Now what are these? Fear of being laughed at. Okay, people don't speak much. Why? Because they are afraid. Because if they say something, people will laugh at them. They have the fear that they might say something humorous or something witty that someone will laugh at them. दिस इज़ द मोस्ट फेयर. यही वो फेयर है जो कि कॉन्फिडेंस को उड़ा देता है. पीपल आर लेस कॉन्फिडेंट. दे आर वेरी लेस कॉन्फिडेंट. वाई? बिकॉज दे फियर. वो इस बात से डरते हैं क्योंकि कोई भी बात ऐसी हो सकती है जिसपे कोई हंस दे. एंड इफ समवन लॉफ्स, कोई हंस देता है, देन देयर कॉन्फिडेंस इज जस्ट ब्लोन अप. दे don't ever speak much, and there are a lot of people in this world who speak very much, very much, because of just this fear. Time pressure. Okay, now time matters a lot during speaking. Let me give you a perfect example for this. For example, assume that we are in a class, right? Our teacher is explaining a topic to us and we are listening to it. After that our teacher asks us for a discussion कि भाई ये topic complete हो गया. You are all allowed to discuss about it. Now I have something to speak, but the lesson or the period is about to over there about just 1 minute, and when I am just speaking, I'm just about to speak, the teacher says, okay, lesson is over, we'll meet tomorrow, and then a laugh is, and then he or she is gone. Now this time pressure, this time being less to speak made me afraid of saying something. It made me afraid कि मेरा तो टाइम निकल गया, I cannot say something. Now जब अगले दिन टीचर आके उसी टॉपिक पे बात करता है, cause I am afraid कि मेरा तो जो टाइम मेरे पास गिवन था, जो टाइम जिसमें मैं पूछ सकती थी, जो कि इफेक्टिव टाइम था, वो गुजर चुका है. मैंने उस टाइम नहीं बोला. So now I am afraid and now I won't speak at all. Thirdly, lack of vocabulary. Lack of vocabulary matters a lot. अगर आपके पास vocabulary नहीं है, different words नहीं है बोलने के लिए, you won't speak. Obviously many of us know English, but जिसके पास इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज होती है, who can speak more different vocabulary words, who can speak more words or have more vocabulary, is considered a pro in English, right? So lack of vocabulary. मेरे पास words नहीं है बोलने के लिए. I don't know one language. I have less words, so I won't speak. Pronunciation. Now pronunciation matters. Why it matters? Because we are all human beings, but we don't have same backgrounds, right? Someone is Punjabi, someone is Saraiki, someone is Balochi, Pathani, Pashto, so ever. Like people have different languages. So when they have different languages, also they know their mother tongues. So जब आप अपनी mother tongue में बात करते हैं, your accent becomes some kind of that. So when you speak a second language, obviously English is in Pakistan, English is a second language. So when you speak a second language, वो आपका first language का जो आपकी pronunciation होती है ना, वो आपके second language पर लाजमी इफेक्ट करती है. उसकी वजह से आपकी जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है. एक प्रॉपर यू माइट हैव नोटिस्ड कि एक जो अंग्रेज़ है, एक जो इंग्लिश मैन है,
वो जिस तरह से इंग्लिश में बोलता है उस तरह से पाकिस्तानी नहीं बोलता. क्यों नहीं बोलता? बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, वी हैव आवर लैंग्वेज, वी हैव उर्दू, वी हैव आवर मदर टंग्स. सो हमारी लैंग्वेज का असर हमारी सेकंड इंग्लिश जो कि हमारी सेकंड लैंग्वेज और मे बी समटाइम्स इट ऑल्सो थर्ड, हमारी थर्ड लैंग्वेज जाती है उस इफेक्ट पड़ता है. तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, right? And obviously we are different people are from Urdu medium, English medium schools, English schools, Urdu English schools, so that also matters. Grammar mistakes: when you don't know how to pronounce or you don't know a language, you will make mistakes, you will have grammar mistakes. These grammar mistakes will make your language literally go blown. They'll blow your language. Your language might not be the same, your language must be changed. आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी. ग्रामर मिस्टेक्स. अब मैं लिख रही हूँ, इफ आई एम राइटिंग समथिंग और आई एम स्पीकिंग, आई एम सेइंग he hit the boy. Now hit it. What's hit it? Hit it not a hit it, it is not a second form of verb. Hit की second form of verb भी hit है और उसके third form of verb भी hit है. So मैं मे बी समटाइम्स आई एम कन्फ्यूज. तो कन्फ्यूजन की वजह से लिखा हिट हो बट उसको मैं पढ़ हिटेड रही हूँ. दैट ऑल्सो दैट द फियर ऑफ बीइंग लॉफ्ड एट द फर्स्ट वन. सो ग्रामर मिस्टेक दे ऑल्सो impart a lot of effect on language. So speaking is a thing like we use it in our daily life. हम daily कुछ ना कुछ बोलते हैं. Obviously we all speak. जब हम कुछ बोलते हैं we use speaking and not always are जो भी हम बात करें हमेशा लाजमी नहीं है कि जो हम बात करें वो बिल्कुल सुनने लायक हो, बिल्कुल ठीक हो. But then there are mistakes, there are problems faced by us. Maybe कुछ problems से किसी को bother होता हो, किसी problem से किसी को मसला होता हो. That differs from human to human, right? So if these problems are eradicated, like fear of being laughed, if you just speak and not being afraid, and also it refers to the audience mustn't laugh. Time pressure is like we just say something, we don't matter about time. It's just that lack of vocabulary. We can increase our vocabulary by reading books, by having the meaning of different difficult meanings. Like we have dictionaries, we can find in that pronunciation. Yeah, we can pronounce by the Google translator, or the thing is grammar mistakes. We can make our grammar good by consulting a good teacher, right? So this is all speaking about.